Hi friends, and today we will be talking about something that affects all of us. Coping with stress at work. Yes, whether it is your tight deadlines, demanding projects, or challenging colleagues, whatever be the source of your stress at work, we have some fantastic strategies that will help you stay calm, keep you focused, and in control. So let's dive right in. But उससे पहले let me know in the comments what is your major source of stress at work. आप ये सोच रहे होंगे कि why I have asked you to comment below the source of your stress. Well, to cope with stress at work effectively, you should first know what is causing you the stress. It can be your colleagues. कोई कोलीग हो सकता है आपके काम से जेलस है, आपकी सक्सेस से जेलस है एंड वो आपके बारे में उल्टी सीधे बातें बनाता है, आपके लिए एक चैलेंजेस क्रिएट करता है वर्क प्लेस पे जानबूझ के. और मे बी योर बॉस इज़ वेरी डिमांडिंग, ही डजंट केटर टू द कैपेबिलिटी. आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है एक टाइम पे किसी चीज़ को लेने में, वो उससे ज़रूरत से ज़्यादा आपको काम देता है. और मे बी आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डेडलाइंस बहुत टाइट हैं, बहुत डिमांडिंग है प्रोजेक्ट्स, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. सो दीज कैन बी द वेरियस रीजन्स फॉर स्ट्रेस एट वर्क. So before you start dealing with that stress, first you need to identify what is exactly causing you stress, and tabhi you can take the right steps. Now the second strategy to cope with stress at work is effective time management. अब as a woman हम लोगों को जगल करना पड़ता है between our family and our career. और डेडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो कुछ डेडलाइंस तो हमारे सीनियर्स हमें सेट करके देते हैं फॉर द प्रोजेक्ट्स, बट उसके अलावा हम लोग भी अपनी एक डेडलाइन सेट करते हैं कि मुझे अगर किसी प्रोजेक्ट को इस दिन सबमिट करना है तो हाउ आई शुड गो अबाउट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ माय कोर्स ऑफ एक्शन, और किस तरीके की डेडलाइंस मुझे अपने लिए खुद सेट करनी है ताकि मैं टाइमली उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाऊँ. बट होता क्या है कि अगर हम इफेक्टिवली टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अ टू डू लिस्ट या आप एक अच्छा प्लानर अपने डेली प्लानर को इफेक्टिवली नहीं बना रहे हैं फॉर योर डेली टास्क्स, तो कभी कोई चीज़ आपके माइंड से स्लिप हो सकती है. इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, इट कैन बी रिलेटेड टू योर फैमिली. तो जब वो स्लिप हो जाएगी तो अल्टीमेटली यू विल फील गिल्टी, उसका भी एक स्ट्रेस हो जाएगा अननेसेसरली एड ऑन. So you should use some tools or you can use some productivity apps जहाँ पर आप एक अच्छे से अपना डेली टास्क का प्लानर या टू डू लिस्ट आप बना सकें. I have made a separate video on how to make an effective to-do list that you can act upon and manage your time effectively. To watch that video, please see the link in the description below. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले अब मेरा फिर से आपसे एक सवाल है. आप एक टाइम में कितनी देर बैठकर अपने लैपटॉप पे काम करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स. ये मैं क्यों पूछ रही हूँ? बिकॉज वेन यू आर सिटिंग एट योर लैपटॉप एंड वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स से मेरा मतलब है 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लगातार. इफ़ यू आर सिटिंग एट योर लैपटॉप एंड वर्किंग, it can lead to burnout and that will add to more stress. So what I recommend is you should always work for 1 to 2 hours at a stretch on your laptop and take regular breaks. अब ब्रेक से मेरा मतलब ये नहीं है कि ठीक है लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, साथ में एक चाय का कप मंगवा लिया या कॉफ़ी का कप मंगवा लिया एंड यू आर सिपिंग द कॉफ़ी और द टी और टेकिंग सम स्नैक्स टू ईट एंड देन वर्किंग ऑन द लैपटॉप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रेक. That won't de-stress your mind. Tea and coffee somewhat can act as a stimulant, but they never de-stress your mind. So what I recommend is once you have worked for 1 to 2 hours at a stretch on your laptop, just get up from your seat. Take a walk outside. अगर आपके ऑफिस में कोई balcony है, or maybe around your seat, you can take a small walk. Stretch your muscles, your neck muscles, your hand muscles, your fingers, you can just stretch like that. because जब आप लैपटॉप पे काम करते हैं, अगर देखा होगा
काफ़ी घंटे काम करने के बाद फिंगर्स भी बहुत स्टिफ हो जाती हैं. सो यू कैन जस्ट गिव अ स्मॉल स्ट्रेच टू योर फिंगर्स, टू योर आर्म्स, टू योर एल्बोज, टू योर नेक मसल्स. About 5-10 minutes break के बाद then return back to your seat and you can start working. इसी तरीके से if you take regular breaks after every 2 hours or so, you will gradually feel that your stress levels have gone down. Try this technique and let me know how was your experience. Now the next strategy to cope with stress is incorporating stress reducing activities in your daily life. सबसे असरदार जो स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी वो है पार्क में वॉक. मैं कभी भी स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ, आई इमीडिएटली गो टू द पार्क एंड टेक अ वॉक फॉर एटलीस्ट 20 to 25 minutes, and when I come back my stress levels are almost nil, and I can I feel that my mind is freshened up and I can restart my work with a fresh mind. So make sure that you incorporate some stress reducing activities like a walk or a jogging or yoga, meditation, or any other such activity that makes you feel calm, that reduces your stress levels. Incorporate such activities into your daily life. It should not be just कि जिस दिन मुझे stress feel हो रहा है उस दिन I am doing this activity and rest of the day I am not doing. No. These stress reducing activities should be a part of your daily routine. Now the next strategy to cope with stress is setting boundaries at your workplace. जैसे कि मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि sometimes your boss or maybe your colleagues can be very demanding and can cause you stress. So it's very necessary that you set clear boundaries with them. बाउंड्री से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने और उनके बीच में एक लाइन लगा ली और हाँ जी ज़रूरत होगी तो ही बात करना है एंड अदरवाइज मैं कट ऑफ हो रही हूँ. नो, बाय बाउंड्रीज और आई मीन इज़ कि उनकी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली सेट करना. सपोज इफ़ योर बॉस इज़ वेरी डिमांडिंग एंड वो आपको कुछ ऐसा काम दे देते हैं विच इज़ आउटसाइड योर केपेबिलिटी, और मे बी दे गिव यू अ प्रोजेक्ट दैट कैन नॉट बी फिनिश्ड विद इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. Communicate this thing to your boss. Learn to say no to them for a particular thing whenever there is a need. And उसमें कोई शर्म वाली कोई बात नहीं है, गिल्टी फील करने वाली कोई बात नहीं है, and there is no need to feel fearful कि यार मैं अगर नो कर दिया अपने किसी कलीग को या अपने बॉस को तो कहीं मेरी जॉब ना चली जाए या मे बी मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब ना हो जाएं अपने कलीग से. नो, बट अगर आप बाउंड्री सेट नहीं करते हैं एंड अगर आप उनकी बात को मानते चले जाते हैं तो उनको लगता है कि दे कैन सेट देयर एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली विद यू, और जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएंगे कभी, वो उनको और ज़्यादा बुरा लगेगा. सो ऑलवेज सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो वेन एवर देयर इज़ अ नीड. हाउ टू से नो विदाउट फीलिंग गिल्टी? सी द वीडियो एट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. Moving on. Now, is this how your workplace looks like? If you keep your workplace so much disorganized, you are bound to feel stressful. Because disorganized things makes you, feel your mood feels low. आपको कोई काम की चीज़ कभी चाहिए तो वो मिलेगी ही नहीं when your table or the workstation is disorganized. So always keep your workplace or workstation very organized. That will also help you cope with stress at work effectively. We come to the final strategy, and that is seeking professional help. If you think that you are feeling too much stressed and all the other techniques which we have talked about have failed to deal with your stress effectively at the workplace, it's time that you seek a professional help from a doctor. There is no harm in seeking a professional help and communicating with medical professionals about your stress, talking about what you feel at the workplace and seeking the right advice from them. And this should be done
विदाउट एनी टाइम डिले, बिकॉज जितना आप टाइम खोते चले जाएंगे, सोचते रहेंगे पता नहीं करूँ नहीं करूँ, ठीक है बाद में करूँगी, अब नहीं करती और थोड़ा दिन देख लेते हैं, आप यू आर लूजिंग योर टाइम एंड द स्ट्रेस विल स्टार्ट टेकिंग टोल ऑन योर फिजिकल हेल्थ एज वेल. So if you feel that all the other strategies have failed in dealing with stress at work, do consult a doctor and talk about all your feelings which you feel about stress at work. So now there is a final recap of all the strategies for coping with stress at work. Number 1 is identifying the source of your stress. Then second is effective time management. Third is taking regular breaks. Fourth is incorporating stress reducing activities. Fifth is setting clear boundaries and learning to say no. Next is keeping your workplace organized. And finally, seek professional help if needed. So these were the strategies which I recommend to you for coping with stress at work effectively. Thanks for watching this video till the end, and let me know in the comments which of these strategies do you find the best or which have worked for you the best. Remember, you can cope with stress at work effectively when you take one step at a time. Remember to take small steps at a time of all these strategies which I have talked about and follow them consistently throughout the process. For more useful content on how to maintain your health, how to achieve your health goals as a working woman, do subscribe to our channel and click on the notification bell so that you never miss a video from us. Till then, take care and stay stress free.